Bismillahirrahmanirrahim, dear students, बिजनेस इकोनॉमिक्स ECO 400 के लेक्चर नंबर 14 में खुश आमदीद। पहले की तरह हम कुछ टाइम अपना पिछला लेक्चर रिवाइज करेंगे, उसके बाद आज का लेक्चर शुरू करेंगे। तो dear students, what we learned in the previous lecture, as you know that we started the second part of our course, that was the macroeconomics. So where we would like to tell you some principles, rules and theories and models which can be applied in the business environment while you're working in some organization. So we started while differentiating between the micro and macroeconomics. हमने बताया आपको कि micro means small. If you look at the word micro means small. So microeconomics when we deal with the individual household and the firms, we discuss about how they make decisions about prices, products, their satisfaction. So that is the scope of microeconomics. तो जब हमने macroeconomics की बात की, so when we are interested to look at the economy as a whole, so then here comes the scope of macroeconomics. And for example, if we are interested or if we like talk about the issues like inflation, unemployment, poverty, growth, trade की बात करते हैं, तो ये सारे के सारे जो चीज़ें हैं macroeconomics में आती हैं। उसके बाद हमने बात की कि how we define GDP. We said that GDP is the market value of all goods and final goods and services produced within a country during a specific time period, which is normally a year or a quarter, and the quarter is of 3 months. So then we have discussed the components of GDP, and we said that there are 4 components of GDP. हमने बात की कि first component of GDP जो है, that is in consumption, and then second component is investment, the third is government spending, and the fourth one is the net exports. So if we add up the spending on all these 4 components, then we'll get the GDP and we'll get the national income identity. And हमने देखा कि किस तरह से national income identity को हम लिख सकते हैं, and we wrote that when y is equal to c plus I plus g plus x minus m or nx, so that is the national income identity, where c is for consumption, I is for investment, and g is for government spending, and x minus m or nx is for the net exports. उसके बाद हमने बात की how we can differentiate between the two concepts, that is the real GDP and nominal GDP. हमने कहा कि जब आप when you calculate GDP at the market price, at the current prices, so then it is known as the nominal GDP. And if you calculate, or as a businessman, as an economist, if we calculate GDP at the constant prices, so that GDP is known as the real GDP. Now the difference is that most of the time economists are interested in measuring the growth rate or the change in GDP over time. In that case they use the concept of real GDP rather than nominal GDP. उसके बाद हमने एक और concept की बात की, GDP deflator की बात की. Now GDP deflator is equal to nominal GDP over real GDP into 100, and we said that GDP deflator is one of the measure of the general increase in general price level, or economists use this an alternate measure to calculate or to measure inflation in the economy. उसके बाद हमने different measures of income की बात की, and we talked about national income, and then we talked about the net domestic product, then we talked about NNP, net national product. उसके बाद हमने बात की personal income and disposable personal income की. तो this was all about the previous lecture. तो उसी chapter को the chapter that which was about the topic which was about national income, how to measure national income, उसी को हम आज के lecture में
कंटिन्यू करेंगे और ट्राई टू फिनिश अप इन दिस लेक्चर द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम, measurement of national income and GDP. So what we are going to learn in today's lecture, क्या हम सीखना चाहेंगे? तो we'll talk about the shortcoming of GDP first of all, and in the second part of the lecture we'd like to see about the supply side of the model, and we'll talk about the model at the economy level, and then we'll talk about what only the supply and then supply side of that model. So this is what we are going to learn today. So we start with the first part of today's lecture, and that is about the shortcoming of GDP. As we know that, as we said that GDP is not the perfect measure of economic well-being, because there are some shortcomings, deficiencies, negative points of GDP. And number one, the first shortcoming of GDP is the non-market transactions. So some productive activities do not take place in the market, and as the GDP only measures the market value of output, so these activities do not show up in the GDP. तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि मार्केट में नहीं टेक प्लेस करती। तो जीडीपी जो है सिर्फ उन एक्टिविटीज़ को, उन प्रोडक्शन को जीडीपी में शामिल करती है जिनकी हम मार्केट वैल्यू निकाल सकते हैं, जो कि मार्केट में प्रोड्यूस होती हैं। सो दीज एक्टिविटीज़ डू नॉट शो अप इन दी जीडीपी, एंड दस GDP understates the national total output. तो जब हम national total output की बात करते हैं तो हम कह सकते हैं कि since some of the productive activities are not included in GDP, so we can say that GDP understates the national total output. Now example of such activities are labor of carpenters who repair their own homes, black markets such as black markets, and so on. So these are some of the productive activities. For example, अगर कारपेंटर अपने घर में काम करता है, कोई अपनी चीज़ें खुद रिपेयर करता है, तो वो जो चीज़ है जीडीपी में शामिल नहीं होती, बट इनफैक्ट इट इज़ ए प्रोडक्टिव एक्टिविटी। इसी तरह बहुत सारे काम जो लोग हैं, बहुत सारे इंडिविजुअल जो है इकोनॉमी में ब्लैक मार्केट के थ्रू काम कर रहे होते हैं, उनमें से बहुत सारी एक्टिविटीज़ प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ होती हैं, एंड दैट आर नॉट इंक्लूडेड इन जीडीपी. तो ड्यू टू दिस फैक्टर वी कैन से दैट जीडीपी अंडरस्टेट्स द टोटल नेशनल आउटपुट. One exception is also there, can be there. Portion of farmers' output that farmers consume themselves is included in GDP. तो किसान जब अपना गंदम लगाते हैं या कोई दूसरी फसलें लगाते हैं तो उसका कुछ हिस्सा वो जो खुद इस्तेमाल करते हैं वो तो जीडीपी में शामिल किया जाता है, लेकिन दूसरी जो प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ हैं जिनकी हमने अभी बात की, लाइक ब्लैक मार्केटिंग है, लाइक जो सर्विस की बात करें, कारपेंटर की हमने बात की, डॉक्टर्स की अगर बात कर लेते हैं, डॉक्टर अगर घर में अपने मरीज़ों को देखता है और वो चार्ज नहीं करता तो उसको सर्विस को शामिल जीडीपी में नहीं किया जाता, राइट. तो उस वजह से हम कह सकते हैं कि जीडीपी जो है अंडरस्टेट करती है टोटल नेशनल आउटपुट को. इसी तरह लेयर दूसरी जो है, वी कैन इन द सेकंड शॉर्ट कमिंग जो चीज़ है उसकी जहाँ पे जीडीपी की हम शॉर्ट कमिंग की बात कर सकते हैं, दैट इज लेयर. जीडीपी ओनली टेक्स द मार्केट वैल्यू ऑफ आउटपुट. देयरफॉर लेयर that within bracket paid vacations, holidays, leave time, which shows increase of well-being, satisfaction and income, psychic income is excluded in the GDP. तो लेयर जो है in the form of paid vacations की जब हम बात करते हैं, हॉलीडेज की बात करते हैं, लीव टाइम की बात करते हैं, तो ये जो चीज़ें हैं एक जो वेल बीइंग है सोसाइटी की, इंडिविजुअल्स की, उसको इम्प्रूव कर रही होती हैं, कंट्रीब्यूट कर रही होती हैं. बट दीज सॉर्ट ऑफ एक्टिविटीज़ आर नॉट इंक्लूडिंग in the GDP. So this could be another shortcoming of GDP.
Another shortcoming is the improved quality of the product. GDP is a quantitative concept or measure and thus does not capture the value of improvement in product quality. तो प्रोडक्ट क्वालिटी में जो विद द पैसेज ऑफ टाइम इम्प्रूवमेंट आती है उसको जीडीपी में शामिल नहीं किया जाता, सिंस इट इज़ ए क्वांटिटेटिव मेजर, सो इट एक्सक्लूड द इम्प्रूवमेंट इन द क्वालिटी इन द प्रोडक्ट क्वालिटी ऑफ ए सर्टेन प्रोडक्ट, सो वो जीडीपी में शामिल नहीं किया जाता। तो इस जिसको हम एक एग्जांपल के जरिए एक्सप्लेन करते हैं। सपोज ए $200 फोन कास्ट द सेम एज ए $200 phone 10 years ago, but technological improvements such as greater memory capacities, viewing screens and enhanced capabilities is not included in the GDP. यानी कि 10 साल पहले अगर एक टेलीफोन पे $200 लगते थे तो आज भी अगर उस फ़ोन पे $200 लगते हैं तो कास्ट इज़ द सेम, बट जो जीडीपी में जिन चीज़ों को नहीं देखा जाता, जिससे फ़ोन की जो क्वालिटी है, उस प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है जो कि 10 साल बाद ड्यू टू इम्प्रूवमेंट इन द टेक्नोलॉजी बेहतर हो गई है, उस चीज़ को जीडीपी में शामिल नहीं किया जाता। तो दिस कुड बी एन अदर शॉर्ट कमिंग ऑफ द जीडीपी के इम्प्रूव्ड प्रोडक्ट क्वालिटी को जीडीपी में शामिल नहीं किया जाता। Another shortcoming could be explained and the underground or the black market. तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ मुल्क में मुख्तलिफ ममालिक में ऐसी होती हैं कि जो कि ब्लैक मार्केट के थ्रू हो रही होती हैं। Embedded in the economy is a flourishing and productive underground sector include gamblers, smugglers, drug dealers, etc. So all these individuals are carrying different activities which are productive in the sense that they are contributing in the economy, right? But most of the time they are excluded in GDP. However, most participants engage in perfectly legal activities but choose illegal methods to produce goods, not to report their full income, and therefore is not counted in GDP. तो इस ऐसी एक्टिविटीज़ जो कि ब्लैक मार्केट में हो रही होती हैं, in fact they are productive activities and they need to be included in the GDP, but in fact practically इन चीज़ों को जब आप GDP निकालते हैं, मेजर करते हैं, तो शामिल नहीं किया जाता। तो this could be another shortcoming of the gross domestic product. तो बहुत सारी ट्रांजैक्शन जिनकी हमने अभी बात की, so that would help to increase a country's GDP as they would increase the money flow coming into the economy. तो इसको हम मज़ीद एक एग्जांपल के ज़रिए एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। A woman who tutors a student in math is earning money legally, but she does not report it to the government. तो वो गवर्नमेंट को रिपोर्ट नहीं करती, and therefore the money involved in this transaction is not included in GDP. On the other hand, a factory employee whose economic status is chartered has an income counted in GDP. तो उसकी तो इनकम शामिल होती है because he is chartered in the उसका जो स्टेटस है वो चार्टर्ड है, लिखा हुआ है, और उसकी इनकम रिपोर्ट होती है जीडीपी में। लेकिन एक खातून जो है जो घर में ट्यूटरिंग कर रही है, पढ़ा रही है, एंड ही इज़ अर्निंग इनकम और मनी बाय लीगल वे, बट उसकी जो इनकम है वो जीडीपी में शामिल नहीं हो रही। तो वैल्यू ऑफ अंडरग्राउंड ट्रांजैक्शंस इन ए कंट्री इज़ ऑफन वेरी लार्ज, राइट? सो we cannot ignore most of the productive activities, right? So इनमें से कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ जो productive हैं, legal हैं, तो that need to be included in measuring GDP of the economy. उसके बाद हमें कुछ और शॉर्ट कमिंग्स की बात करेंगे या पॉजिटिव चीज़ों की बात करेंगे कि जो कि जीडीपी को इफ़ेक्ट करती हैं, लेकिन उनका जीडीपी को कैलकुलेट करने के वक्त उनका ख्याल नहीं रखा जाता, उनको निकाला नहीं जाता, उनको एक्सक्लूड नहीं किया जाता। लाइक हम बात करेंगे अभी जीडीपी एंड द एनवायरनमेंट की। द ग्रोथ ऑफ जीडीपी इज़ इनेविटेबली accompanied by gross domestic byproducts like, for example, dirty air, polluted water,
toxic water, congestion, and noise. So these are the activities which basically can affect the nation gross domestic product. The social cost of negative byproducts reduce our economic well-being, right? So they actually like जिन चीज़ों की आपने अभी बात की, environment के हवाले से polluted water की बात की, dirty air की बात की, toxic waste की बात की, congestion की बात की, noise की बात की, तो they can basically reduce put negative effects on the economic well-being of the society. But cost of environmental these harm are not, but the cost of these environmental harms are not excluded or deducted from the GDP. Therefore, जब इनको हम GDP से नहीं निकालते तो हम ये कह सकते हैं GDP overstates national well-being. And so ironically, the cost of cleaning up the environment are included in GDP. So negative and positive externalities are misrepresented or ignored. तो जो कास्ट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़ की जिनकी हमने अभी बात की कि हमने कहा कि कास्ट ऑफ क्लीनिंग एनवायरनमेंट की तो उसको शामिल जीडीपी में किया जा सकता है, लेकिन जो चीज़ें एनवायरनमेंट को ख़राब करती हैं, पोल्यूट करती हैं और दैट कैन हार्म द वेल-बीइंग, इकोनॉमिक वेल-बीइंग ऑफ द सोसाइटी, तो उनको इसमें से जीडीपी में से नहीं निकाला जाता. और जैसा कि हमने बात की डर्टी एयर की, पोल्यूशन की, वेस्ट वाटर की, तो ऑल दीज सॉर्ट ऑफ थिंग्स नीड टू बी डिडक्टेड फ्रॉम जीडीपी, बट उनको नहीं निकाला जा सकता. नाउ we'll try to discuss further shortcomings of GDP. Continue with this topic, composition and distribution of output. GDP does not tell us what mix of goods and services benefit or harm a society, because it assigns equal weight to products of the same price. Some price of some goods or services are enriching or potentially detrimental to society. For example, हम बात करें a salt rifle is equal to book, right? So it does not, GDP का जो कंसेप्ट है ये हमें सही मिक्स नहीं बताता चीज़ों का और सर्विसेज का कि कौन सी चीज़ें सोसाइटी के लिए नुकसानदेह हैं, कौन सी चीज़ें सोसाइटी के लिए बेनिफिट हैं, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम they give equal weights to the products of the same price. So we cannot differentiate what would be the good mix of the product that is useful or better for the improvement of the welfare of the society. And now GDP does not reveal anything about how output is distributed. तो GDP में इस चीज़ का भी जिक्र नहीं किया जाता जब मेजर किया जाता है किस तरह से आउटपुट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा among different factors of production, among different sections of the society, which is very, very important. How distribution of income can be made equal among different sections of the society in the economy. Therefore, GDP does not tell us the well-being of a society because distribution makes a big difference, right? तो हम ये कह सकते हैं कि GDP हमें सोसाइटी की वेलफेयर को सही तरीके से नहीं बताती क्योंकि कहीं पे भी इसका जिक्र नहीं होता कि किस तरह से नेशनल इनकम को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए अमंग डिफरेंट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी. तो सोसाइटीज बेटर ऑफ if there is a gap between wealthy and poor, but GDP does not represent this aspect of well-being. तो सोसाइटी हमें जीडीपी जब हम मेजर करते हैं तो हमें ये नहीं बताती कि अगर जो गैप है रिचर और पुअर का कम हो जाए तो सोसाइटी की जो वेल बीइंग है बेहतर हो जाएगी, सोसाइटी बेहतर हो जाएगी, इकोनॉमिक वेल बीइंग अच्छी हो जाएगी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा हो जाएगा. अगर ये गैप जो है बिटवीन रिचर एंड पुअर बढ़ता जाएगा तो सोसाइटी की वेलफेयर कम हो जाएगी. तो इन चीज़ों का जिक्र कहीं जब जीडीपी हम मेजर करते हैं तो नहीं आता. तो जीडीपी के दिस कुड बी वन ऑफ द शॉर्टकमिंग बिकॉज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम अमंग सोसाइटी इज इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. इसको निग्लिजिबल नहीं कर, इसको जो है ना इग्नोर नहीं करना चाहिए, राइट? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम शुड बी इक्वल और द गैप बिटवीन
poor and rich should be lesser, right? जो ही gap कम होगा तो society की well-being बेहतर होगी. Now we'll talk about the per capita output. GDP itself does not reflect the well-being of the people in the nation. It is the GDP per capita, in fact, that is important. तो जब हम बात करते हैं कि हम ये कहते हैं कि GDP is one of the measure or the tool of the society welfare, तो हम actually it is not it does not exactly reflect the well-being of the people in the nation. In fact, it is the GDP per capita. GDP की जब हम बात करते हैं तो ये true measure नहीं होता society welfare का. In fact, जो concept use किया जाना चाहिए, that should be the GDP per capita. GDP per capita or the per capita income, which is very important. इस चीज़ को हम कोशिश करेंगे explain करने के लिए with the help of an example. For example, China GDP in 2004 was $1938 billion, and Denmark GDP was $220 billion. But the Denmark GDP per capita was $40,000+, while China per capita GDP was $1,500. So the living standard in Denmark are superior to the China, since the average income for each person in Denmark is much higher. तो अगर हमने जैसा कि हमने इस एग्जांपल में कंपेयर किया, हमने ये देखा कि सन 2004 में अगर हम देखें इन दो कंट्रीज़ की बात की, हमने चाइना और डेनमार्क की. इफ़ वी कंपेयर द जीडीपी ऑफ बोथ ऑफ द कंट्री, तो हमने ये देखा कि चाइना की जीडीपी जो थी उस वक्त 2004 में $1900 के करीब थी, और डेनमार्क की जो जीडीपी थी दैट वाज 200+ बिलियन डॉलर. तो यहाँ से हमें क्या नज़र आ रहा है कि जीडीपी, चाइना की जो जीडीपी इज़ मच बिगर, मच हायर देन दी Denmark GDP. On the other side, we have compared the GDP per capita, and we said that in 2004 GDP per capita in China was 1,500, GDP per capita in Denmark was 19,000 plus US dollar, 40,000 plus US dollar. So the standard of living of the people in Denmark was higher as compared to the standard of living of people in China. And this is because of the reason, because the per capita income GDP per person was higher in Denmark as compared to China. तो हम ये कह सकते हैं कि GDP is not actually the measure of economic well-being. And the actual measure of economic well-being of a society or individuals in the country or in the economy is GDP per capita or the per capita income. तो हम ये कह सकते हैं GDP इतना अच्छा measure नहीं है. अगर आपने किसी सोसाइटी की वेलफेयर को measure करना है, इकोनॉमिक वेलफेयर को देखना है, तो GDP जो है एक अच्छा measure नहीं है. इसके बदले आप जो है जीडीपी पर कैपिटा या पर पर्सन यूज़ कर सकते हैं. अगर आप देखें कि जिस मुल्क की जीडीपी पर कैपिटा पर पर्सन ज़्यादा होगी, वहाँ के लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेहतर होगा उन मुल्कों की निस्बत जहाँ पे जीडीपी पर कैपिटा लेस या कम होगी. सो दिस कुड बी एन अदर शॉर्टकमिंग ऑफ द जीडीपी. Now, an increase in GDP could actually be accompanied by a decrease in GDP per capita and vice versa, depending on the population growth. तो अगर किसी कंट्री की, अब इसके पीछे फैक्टर क्या हो सकता है कि एज यू नो दैट कि हम GDP पर कैपिटा कैसे निकालते हैं. GDP पर कैपिटा और द पर कैपिटा इनकम इज इक्वल टू GDP ऑफ द कंट्री ओवर पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री. तो पॉपुलेशन पे बहुत डिपेंड करता है. अगर किसी मुल्क की पॉपुलेशन ग्रोथ ज़्यादा है या पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ रही है, लोग ज़्यादा हैं और जीडीपी इतनी ज़्यादा नहीं है, तो उसकी जो पर कैपिटा जीडीपी है वो कम होगी. तो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो जहाँ पे पॉपुलेशन का ग्रोथ ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू द ग्रोथ इन जीडीपी, सो दोज कंट्रीज हैव लेस पर कैपिटा जीडीपी, एंड दैट कैन ऑफ कोर्स रिफ्लेक्ट on the standard of living of the people of the society in that particular country. Non-economic sources of well-being. We will continue with the shortcoming of GDP. So we'll try to explain another shortcoming of GDP. Just as household income does not measure its total happiness,
नेशन जीडीपी डज नॉट मेजर इट्स टोटल वेल बीइंग। तो जैसे कि हम कहते हैं कि एक हाउस होल्ड की टोटल इनकम जो है उसकी टोटल मैयर और या उसकी टोटल खुशी को मैयर नहीं कर सकती, इसी तरह हम कह सकते हैं ए नेशन जीडीपी डज नॉट मैयर इट्स टोटल वेल बीइंग ऑफ सोसाइटी। देयर आर मैनी थिंग्स दैट कुड मेक ए सोसाइटी बेटर ऑफ विदाउट नेसेसरली रेजिंग जीडीपी। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको आप अच्छा करके लोगों की वेलफेयर को बेटर कर सकते हैं, सोसाइटी की वेलफेयर को अच्छा कर सकते हैं। कि अगर आप जीडीपी नहीं भी बढ़ा रहे, अगर आप उन चीज़ों को अच्छा कर लेते हैं कंट्री के अंदर, इकोनॉमी के अंदर, तो आप लोगों को स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेहतर कर सकते हैं। यू कैन रेज द सोसाइटीज वेल बीइंग एंड दोज थिंग्स आर फॉर एग्जांपल क्राइम रिडक्शन। अगर मुल्क में क्राइम कम हो जाए तो स्टेबिलिटी आती है, इकोनॉमी ग्रो करती है, तो ऑटोमेटिकली स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोगों का बेहतर हो जाता है। Peaceful international relation, so it also depends on the relations of your economy, your country with other countries. अगर आपके रिलेशन पीसफुल हैं, अच्छे हैं, फॉरेन पॉलिसी अच्छी है, तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोगों का बेहतर हो सकता है। ग्रेटर civility among the people. If people are more civilized, educated, trained, skilled, of course standard of living and well-being of the society can be increased. Less drug and alcohol abuse, etc. These are few things which can increase the society welfare without raising the country's GDP, right? So this could be another shortcoming of GDP. GDP merely reflects the trade going on in the country's market. So ट्रेड का कोई जिक्र नहीं हुआ। जीडीपी की जब हमने बात की, हमने देखा कि हमने कहा कि जीडीपी के 4 कंपोनेंट है, कंजम्पशन है, इन्वेस्टमेंट है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग है एंड नेट एक्सपोर्ट है। बट वी हैव नॉट टॉक्ड अबाउट द ट्रेड विच इज बीइंग कंडक्टेड आर टेकन इन द कंट्री। बेसिकली विद इन द कंट्री भी बहुत सारी ट्रेड हो रही है, चीज़ें एक शहर से दूसरे शहर में जा रही होती हैं। तो since the GDP basically reflect the production of goods and services produced in within the country, तो domestic trade की भी बात बहुत ज़रूरी है। So that could also help to improve or increase the GDP and also help to improve the economic well-being of the society. So we have done with the first part of the lecture. तो जहाँ पे हमने बात की कि देयर आर लॉट ऑफ, वी हैव डिस्कस सो मैनी शॉर्ट कमिंग्स इन जीडीपी, जिनको जीडीपी में शामिल कुछ चीज़ों को हमने बात की। कुछ ऐसी अशिया हैं, कुछ ऐसी एक्टिविटी हैं जिनकी आउटपुट और एक्टिविटीज़ को जीडीपी में शामिल किया जाना चाहिए, और हमने कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ की भी बात की कि जिनको जीडीपी में शामिल नहीं किया जाना चाहिए, एक्सक्लूड करना चाहिए। तो दीज वर सम ऑफ the shortcoming which a country must consider while calculating or measuring the gross domestic product. Now we'll go to the second part of the today's lecture. आज के लेक्चर के दूसरे हिस्से की तरफ हम जाएंगे, जहाँ के मैंने आपको बताया हम एक मॉडल की बात करेंगे, और मॉडल में स्पेशली विद रेफरेंस टू सप्लाई साइड बात करेंगे। Now suppose we assume that जिस मॉडल की हम बात करने जा रहे हैं, इट इज़ ए क्लोज्ड इकोनॉमी, इट इज़ नॉट एन ओपन इकोनॉमी, राइट? बट क्लोज्ड इकोनॉमी मीन्स देयर इज़ नो, वी आर एक्सक्लूडिंग द इंटरनेशनल ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट, and it is a market clearing model. So markets, the market, basically the forces clear the market, like demand and supply of goods, demand and supply of labor. So we'll talk about a closed economy model, and we have to look at the supply side as well as on the demand side. On supply side, what we are going to see that factor markets, आप factors की supply की बात करेंगे और उनकी demand की बात करेंगे, and then we'll see that what will be the price of those factors, and then after that we'll try to see distribution of output and income among different factors of production जो कि use किए जाते हैं in the process of production to produce goods and services for the economy. So when we talk about demand side, so we'll see the determinants, we'll try to see the determinants of consumption, investment and government. So and then try to determine equilibrium in the market, in the goods market and in the factor market. So this is what we are going to learn in the second part of the lecture. Now we start from the supply side. So when we discuss the supply side, first of all
जो पहली सबसे चीज़ आती है सप्लाई साइड पे, दैट इज़ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। कौन से फैक्टर्स हैं, कौन से ऐसे पैरामीटर्स हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं प्रोडक्शन के लिए, चीज़ों को प्रोड्यूस करने के लिए। सबसे पहला जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दैट इज़ कैपिटल। कैपिटल इज़ इक्वल टू टूल्स, capital, machines and structures used in the production process. And labor is the labor supply, the physical and the mental efforts of the worker. So we use these two factors of production, K and L, and produce goods and services. So we can write a production function in the form like Y is equal to KL. So production function कैसे लिख सकते हैं हम? Y Now production function can be written as, जैसा कि आपको नजर आ रहा है, Y is a function of capital and labor. So it shows, production function shows the output Y is the economy can produce from K units of capital and L units of labor. So production function ये हमें बताता है कि अगर इकोनॉमी इतने यूनिट्स कैपिटल के लगाए एंड इतने यूनिट्स लेबर के लगाए तो इट कैन प्रोड्यूस सर्टेन क्वांटिटी ऑफ आउटपुट and of course they use certain level of technology जिसको normally हम A से show करते हैं। तो technology is also a factor which can be considered during the production process, and sometime it exhibits constant return to scale. Now what we mean by constant return? If the increase in output is the same or equal as we increase the input increase in the output, then we can say that the economy is earning constant return to scale. तो अगली स्लाइड में हम डिटेल में बात करेंगे कि कब हम कहते हैं कि इकोनॉमी में इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल है, डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल कब होते हैं, एंड व्हेन देयर आर कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। नाउ एक रिव्यू करेंगे कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल को, द रिटर्न टू स्केल को। जब हम प्रोडक्शन की बात करते हैं, हम ये कहते हैं कि प्रोडक्शन के लिए कैपिटल और लेबर को यूज़ किया जाता है एज ए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, तो उस वक्त हम रिटर्न्स की बात करते हैं कि when we can say that economy is earning increasing return to scale, sometime decreasing return to scale, what will be the situation when there are decreasing return to scale and when there are constant return to scale? Initially we start and we can write production function अगर जैसा कि आपको नजर आ रहा है y1 is equal to f into k1 l1. Now scale all inputs by the same factor. अगर आप same factor से all inputs को बढ़ाते हैं, like suppose k2 is equal to zk1 and l2 is equal to zk2 and if z is equal to 1.25, then all inputs are increased by 25%. तो यहाँ पे हम ये बात करें कि हमने स्टार्ट किया कि अगर प्रोडक्शन फंक्शन इज इक्वल टू k1 l1 है और हम इनपुट्स को सेम स्केल से बढ़ाते हैं एंड दैट सेम स्केल इज z एंड इफ z इज इक्वल टू 1.25%, तो हम ये कह रहे हैं कि ऑल इनपुट्स आर इंक्रीज्ड बाय 25%. नाउ जब all inputs are increased by 25% in the production process, so what will happen to the output? Output को क्या होगा? So y2 is equal to f2. So y2, now the production function can be written as y2 is equal to k2 and l2. तो दोनों प्रोडक्शन फंक्शन में क्या फ़र्क है? जो पहला प्रोडक्शन फंक्शन था उसमें k1 units of capital यूज हो रहे थे and l1 units of labor to produce y1. Now k2 units of capital are used and l2 units of labor are used to produce y2 units, and we said that we suppose that all inputs are increased by 25%. If all inputs are increased by 25%, now what is going to happen to the output? So we'll see that now. If constant return to scale, जब हम कहेंगे कि there are constant return to scale, so then y2 will be equal to 2y1. Why? Because all inputs are increased by 25%. So all inputs are increased by z, and z is equal to 1.25. So we have increased all of the inputs by 25%. So we can say that if there are constant return to scale
in the economy, then Y2 is equal to ZY1. If we say there are increasing return to scale, then Y2 will be greater than 2Y1 as at Y1. And when we say that there are decreasing return to scale, then Y2 will be less than ZY1, right? तो आप इसी चीज़ को हम दूसरे अल्फाज में एक्सप्लेन कर सकते हैं. जब हम ये कहते हैं कि there will be constant return to scale, then the output will increase by the same percentage as we have increased the input. So जैसा कि यहाँ पे हमने कहा कि all inputs are increased by 25%. जितनी की inputs हैं, कैपिटल और लेबर दो हमारे पास inputs हैं, अगर हम उनको 25% बढ़ा दें और अगर हम ये कहते हैं इकोनॉमीज में constant return to scale होंगे तो आउटपुट भी 25% ही बढ़ेगी. And when we say that there are increasing in return to scale, there will be increasing return to scale if increase in output will be more than increase in input. As we said here that input has increased by 25%, and we are saying that there will be increasing return to scale, so output will be increased more than 25%. It can increase, say, let us 50%, 75%, by 100%, right? So increase in output will be more than the increase in input. So that situation is known as increasing return to scale. जब हम ये कहते हैं कि there will be if there are decreasing return to scale, so in that case the increase in output will be less than the increase in inputs. अगर inputs में 25% इजाफा हुआ है तो output में जो इजाफा होगा 25% से कम होगा. So this is how we can explain the return to scale phenomena with reference to production function. तो I will repeat it again. हमने ये बात की कि अगर हम inputs को all inputs जितनी भी production process में यूज़ हो रही हैं एक किसी खास परसेंटेज से बढ़ाते हैं, अगर आउटपुट में भी उतना इजाफा होता है तो हम ये कहेंगे कि देयर आर कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल. एंड इफ अगर इनपुट अगर हमने 25% बढ़ाई और आउटपुट में जो इजाफा होता है 25% से ज़्यादा होता है, लेट अस से 50% और 60%, तो हम ये कहेंगे देयर आर इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल. एंड इफ the increase in output is less than the decrease in input, then the increase in input, so then we can say that there are decreasing return to scale. अगर हमने जैसा कि इस एग्जांपल में हमने इनपुट को 25% बढ़ाया और अगर आउटपुट 25 से कम फीसद बढ़ती है, let us say 20 or 15%, then there will be decreasing return to scale in the economy. We'll continue with the supply side and determining GDP की बात करेंगे. Output is determined by fixed factor supplies and the fixed state of technology. So we can determine the output with the fixed unit of factors of production, capital and labor both, as well as fixed state of and technology, and that production function can be written as y bar is equal to f into k bar l bar. तो बार जो है यहाँ पे शो कर रहा है कि capital is fixed, labor is fixed, and then output is also fixed, which is determined with the help of fixed capital and fixed units of labor. जैसा कि मैंने बताया तो यहाँ पे हम distribution of national income की भी बात करेंगे. So how the income is distributed? So determined income is distributed among different factors of production which are used in the production process, and this distribution is determined by factor pricing, the price per unit that firms pay for the factors of production. As we know that the wage is the price of labor and the rental rate is the price of capital. Notations that can be used or that we are using here or will use in the subsequent lecture or chapters. W is normally for the nominal wage, capital R is for the nominal rental rate,
कैपिटल प्राइस इज़ फॉर द प्राइस ऑफ आउटपुट। तो जब हम कैपिटल की बात करते हैं तो जितने भी हम चीज़ें हैं जितने भी वेरिएबल हैं उनको नॉमिनल हम कहते हैं कि when W is capital it means nominal wage. When we talk about R it means nominal rental stay, and when we talk about price it is the price of output. When we divide W, that is the wage, by price, that will become real wage, और इसको हम small w से जाहिर करते हैं. And then when we divide rental rate R with P, that would become the real rental rate. And how we can differentiate between the nominal variables and the real variable. So when you deflate or take the ratio of the nominal parameters with the price, so that will become the real variable. Now how factor prices are determined? Factor prices are determined by the supply of the factors and demand in the factors market. As we know that, जैसा कि हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स में बात की थी कि we have in case of market of goods, हमने बात की there is a supply of goods on one side, on the other side there are supply of goods. On one side we have the supply of goods, on the other side we have demand of goods. So both these two forces work together and determine equilibrium in the market, right? Similarly, in macroeconomics we have the factor market. In factor market में एक side पे हमारे पास supply of factors of production होती है, on the other side we have demand of the factors of production, and we can bring these two forces together, supply and demand of factors of production, and determine the factor prices in the market. Now the second side of the model is about demand. So what is demand for labor? Assumes markets are competitive. अगर हम assume करते हैं कि market is competitive, then each firm takes W, R and P as given. तो जैसा कि हमने अभी explain किया था market structure में कि जब market competitive होती है तो then each firm will assume that wages are given, or the rental rate is given, and the price of output is also given. So basic idea behind this assumption is that a firm hire each unit of labor if the cost not exceed the benefit. So the firm will continue to hire labor up to the point until the marginal product of labor is equal to the wage rate. The price जो है उसकी that should be equal to the cost of the labor, right? So we can say that cost is equal to real wage, so benefit is equal to marginal products. So until the firm or the firms will continue to hire the labor till the point where wage will be equal to the marginal product of labor. So this is how we can determine the demand of the labor. तो फर्म्स उस वक्त तक लेबर डिमांड करती है जब तक उसकी जो प्रोडक्टिविटी है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है, वो वेज के और द प्राइस ऑफ लेबर के बराबर होती है. एंड we have already explained the concept of marginal productivity in detail. It is the extra output of the firm can produce using an additional unit of labor, holding other input constant or fixed. So we can say that marginal product of labor is equal to FKL plus 1 minus FKL. Now FKL plus 1 means capital is fixed, is the same as we have used in the previously, but we have just added one more unit of labor. So minus the product, previous product output. So if we subtract these two, we'll get the marginal product of labor. इसको मैं दोबारा एक एग्जांपल के ज़रिए आपको एक्सप्लेन करता हूँ द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर. अगर हम ये कहें कि कैपिटल इज़ फिक्स, सपोज 100 यूनिट्स ऑफ कैपिटल, एंड हम ये कहते हैं कि अगर इफ़ द फर्म एम्प्लॉय 20 यूनिट्स ऑफ लेबर एंड 100 यूनिट्स ऑफ कैपिटल, दे प्रोड्यूस 1000 यूनिट ऑफ ए सर्टेन प्रोडक्ट. तो हमने क्या कहा कि अगर 100 यूनिट कैपिटल की यूज़ करता है और 20 यूनिट लेबर के यूज़ करता है और फर्म प्रोड्यूस करता है 1000 यूनिट ऑफ ए सर्टेन प्रोडक्ट. नाउ सपोज कैपिटल रिमेन फिक्स एट 100 यूनिट्स ऑफ कैपिटल, एंड इफ the firm uses 21 units of labor instead of 20 units. So how much is the change in total output or the product output? So suppose
from 1000 to 1100. Now how much is the change in total to output due to one extra unit of labor? That is 100. So that 100 is known as the marginal product of labor. तो एक additional मजदूर की वजह से, एक additional worker की वजह से capital जब fix रहा तो output में जितना इजाफा हुआ, that is known as the marginal product of labor. And we have said that the firm will continue to hire more labor till the point wage will remain equal to the marginal productivity of the labor. So we can explain this concept of marginal productivity of labor and with the help of production function curve. As we know that we have already drawn this in the previous lectures. दोबारा इसको ड्रॉ करते हैं और एक्सप्लेन करते हैं, रिलेट करते हैं with marginal product of labor. On y-axis we are measuring total product. On x-axis we are measuring labor. So we have a production function curve which is positively sloped, which shows that if we hire more labor, continue hiring more labor, output will increase. Initially reaches its maximum, and then after that point when the total product is maximum, and if the firm continue to hire or use more labor in the production process, output start declining or falling after that point. And the slope of production function, that is the change in labor, change in output due to change in labor, is known as the marginal product of labor. As more labor is added, MPL is going down. So slope of the production function is known as the marginal product of labor. तो जैसा कि आप as soon as you can continue to add more labor in the production process to produce more product, the marginal products will continue to decline. Total output तो बढ़ेगी, लेकिन उसकी जो marginal product है हर additional unit की वो कम होगी. So this is how we can explain the relationship between total product and marginal product and the slope of production function. We'll continue discussing our model. इस स्लाइड पे अगर देखें, we are talking about diminishing marginal returns. As a factor input is increased, the marginal products falls, other things remains equal. तो जैसा कि हमने अभी पिछले डायग्राम में देखा कि as long as the firm continue to hire more labor, its marginal products goes down, right? So this phenomena explain the diminishing marginal returns, that each additional unit of factor of production gave less returns as compared to the previous unit. So this phenomena is known as diminishing marginal returns. What is the intuition behind that? अगर लेबर बढ़ाते हैं, इंक्रीज करते हैं, जैसा कि आप स्लाइड में देख रहे हैं, while holding K fixed, so fewer machines per worker, तो पर मजदूर जो है कम मशीन्स आ जाएंगी तो प्रोडक्टिविटी क्या होगी? कम हो जाएगी, क्योंकि आपने टेक्नोलॉजी नहीं बढ़ाई, कैपिटल फिक्स है, उतनी मशीनरी यूज़ कर रहे हैं जितनी की पहले यूज़ कर रहे थे, लेकिन आप नंबर ऑफ लेबर्स बढ़ाते जा रहे हैं, राइट? जब लेबरर्स बढ़ते जा रहे हैं, मशीनरी उतनी है, कैपिटल उतना है, तो जो मशीन्स हैं पर वर्कर वो क्या होंगी? कम हो जाएंगी. जब मशीन्स पर वर्कर कम हो जाती हैं तो प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी. जब प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी तो मार्जिनल प्रोडक्ट जो है, जो एडिशनल वर्कर की वजह से है, तो दैट विल गो डाउन. तो दिस एक्सप्लेन द diminishing marginal returns, and we can explain this with the help of this diagram also. We are measuring units of output on y-axis, जैसे कि आपको ग्राफ में नजर आ रहा है, और on x-axis we are measuring L units of labor. So we have drawn the demand curve, which is also known as the marginal product curve, जो कि हमें बता रहा है कि as long as firm continues to hire more labor in the production process when capital remain fixed, so जो each additional unit है वो less productivity देगा as compared to the previous unit, और marginal product fall करना शुरू कर जाएगी, and we have negatively sloped demand curve, which is the marginal, which is also known as the curve of marginal productivity of labor.
तो हमने क्या नतीजा खर्च किया बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स से, कि हमने कहा कि अगर हम एक फैक्टर विच इज़ कैपिटल उसको फिक्स रखते हैं और प्रोडक्शन प्रोसेस में टोटल आउटपुट को बढ़ाने के लिए फर्म ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट लगाता जाता है प्रोडक्शन प्रोसेस में, तो ईच एडिशनल यूनिट हमने ये कहा कि लेस प्रोडक्टिविटी देगा एज कम्पेयर टू दी प्रीवियस यूनिट, और मार्जिनल प्रोडक्टिविटी फॉल करना शुरू कर जाती है, एंड दिस इज नोन एज the diminishing marginal returns. So we got the negative sloped marginal productivity curve, as well as which is also known as the demand curve of labor. So similarly we can explain the determining the rental rate, जैसा कि हमने marginal price of labor determine की. Similarly we can determine the price of rental rate. So we have just seen that MPL is equal to W over P. Firm will continue to hire labor, will continue to use labor until the marginal product of labor is equal to its wage rate, real wage. So same logic shows here that the firm will continue to hire capital until marginal product of capital will be equal to the real rental rate. So as we have explained the phenomena of diminishing marginal returns of labor, similarly we can explain the diminishing marginal returns to capital. जो ही एक फर्म जो है मोर एंड मोर कैपिटल यूज करती है प्रोडक्शन प्रोसेस में, तो उसके रिटर्न्स जो हैं एडिशनल यूनिट्स के कैपिटल के वो कम होते हैं. इट मींस मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ capital declines as more units of capitals are used in the production process. So the MP curve is the firm demand curve for rental capital. It is also negatively sloped. So firm maximize profit by choosing K units, such K units of capital at which MPK will be equal to R over P, that is the real rental price. So the new classical theory of distribution states that each factor input is paid its marginal product accepted by, and this is accepted by most of the economists. So new classical economists ne kaha, and they have given the theory of distribution, and they, according to that theory, each factor of production is paid, or the price of each factor of production is determined according to its marginal productivity. So marginal product, each factor is paid according to its marginal product, and this principle is accepted by most of the economists in the literature. Now how income is distributed, we will continue that. So what will be the total labor income? Total labor income is equal to, जैसा कि आपको स्लाइड में नजर आ रहा है, that is equal to W over P into L bar, which is fixed labor, is equal to marginal productivity of labor into L bar. So what have we have done that to find out the total income of the labor, हमने क्या किया कि जो इक्वेशन हमारे पास आई थी MPL is equal to W over P, उसको हमने दोनों साइड से एक फिक्स यूनिट ऑफ लेबर से मल्टीप्लाई किया, and that will give us the total labor income. And then we have total capital income. Similarly, we can find the total capital income, that is equal to R over P into K bar is equal to MPK into K bar. So we have total labor income and total capital income. So we can write that Y bar is equal to MPL into L bar plus MPK into K bar. So first part of the equation on the right side is the total labor income, and the second part is the total capital income. So if we add up the labor income plus capital income, that will give us the national income. So we can say that the national income is distributed among the factors of production which are used in the production process. So total national income will be equal to the total labor income plus total capital income. So this is all about today's lecture. I will try to revise what we have learned today. So in the first part of the lecture, I explained to you the shortcoming of GDP. GDP की हमने पिछले लेक्चर में बात की थी कि GDP is important factor which determine the welfare of economic welfare of the society,
हमने बात की कि कैसे इसको मेजर किया जा सकता है। तो आज के लेक्चर में हमने ये देखा कि देयर आर सर्टन शॉर्ट कमिंग ऑफ जीडीपी। हमने देखा कि देयर आर लॉट ऑफ शॉर्ट कमिंग, बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो कि जीडीपी में शामिल होनी चाहिए जब आप जीडीपी निकाल रहे हों, और बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं कि जो कि जीडीपी में शामिल नहीं होनी चाहिए। यू नीड टू एक्सक्लूड दोज थिंग्स फ्राम जीडीपी, and then you can say that GDP is a perfect measure of economic well-being of society। तो उसके बाद हमने ये भी बात की कि जीडीपी के साथ साथ, जीडीपी के अलावा there is another measure which is a true measure of economic well-being of society, so that is the per capita income or GDP per capita। तो हमने उसको एग्जाम्पल के ज़रिए भी हमने शो किया कि जिन ममालिक में जीडीपी पर कैपिटा ज़्यादा होती है वहाँ पे लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेहतर होता है एज़ कम्पेयर टू अगर जिन मुल्कों की जीडीपी ज़्यादा हो और दूसरे ममालिक से। तो उसके बाद हमने, दिस वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ टुडेज लेक्चर जहाँ पे हमने शॉर्ट कमिंग ऑफ जीडीपी की बात की, और सेकंड पार्ट ऑफ टुडेज लेक्चर्स में हमने बात की एक मॉडल की जिसमें हमने उसकी सप्लाई साइड देखी, उसकी डिमांड साइड देखी, और हमने ये कहा कि किस तरह फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की प्राइसेस डिटरमिन की जाती हैं, क्या उनको पे किया जाता है, एंड हाउ द टोटल नेशनल इनकम और टोटल इनकम इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग टू डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो उस पर भी हमने बात की। तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। तो स्टूडेंट, आज का लेक्चर हम यहाँ पे ख़त्म करेंगे। उस ख़त्म करने से पहले एक एडवाइस आपके लिए, सिंस वी हैव स्टार्टेड आवर सेकंड पार्ट ऑफ द कोर्स विच इज़ अबाउट द मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जो चीज़ें आज हमने सीखी आज के लेक्चर में, तो आज आप प्लीज़ इनको जा किताब में ज़रूर पढ़िएगा, ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़े हैं, दीज आर द बेसिक कॉन्सेप्ट, इनको आगे हम लेके चलेंगे, इनको आगे हम यूज़ करेंगे, तो आपके ये कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए ताकि आपको अगले लेक्चर जो हैं आसानी से समझ आ सकें। तो कोशिश करें, गिव ए थॉरो रीडिंग फ्रॉम द बुक अबाउट व्हाट वी हैव लर्न टुडे। विद दीज वर्ड्स स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं। टिल नेक्स्ट टाइम, सी यू, अल्लाह हाफिज़।